To invocation to the Supreme God, to the Great Divine Father and the Great Divine Mother, thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine power, divine healing, guidance, mercy, help, and protection. Thank you. To our great spiritual teacher, to all the great spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great ones, we incredibly humbly thank you for your great blessings. Thank you. To the great teacher, Sri Ramakrishna, and to all his great disciples, we are incredibly indebted to you for your priceless blessings, for your teaching and guidance in the form of this book. We are very grateful, very grateful. Thank you so much. Right, so सॉरी, मैं भूल गया हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, हम ये बता रहे थे कि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जो श्री रामकृष्ण थे उनके वहाँ पे एक लेडी आई, उसका नाम था गौरी। वो फीमेल मॉन्क थी एक्चुअली, एंड शी सॉ कि ही इज अ गॉड इनकारनेट। ही इज अ गॉड इनकारनेट मतलब, एंड शी कि आप स्कॉलर्स को बुलाइए, बेस्ट स्कॉलर्स को बुलाइए। उन्होंने वो केयरटेकर को, केयरटेकर मतलब वो जो वहाँ के जो रसमनी के जो भाई या आई थिंक रिश्तेदार थे, उनको बोला कि आप बेस्ट स्कॉलर्स को बुलाइए जिनको कि एक्चुअली में नॉलेज है इस सब्जेक्ट की, एंड लेट्स हैव अ डिबेट कि वेदर ही इज एक्चुअली अ गॉड इनकारनेट और नॉट। इन्होंने बुलाया, सबको बुलाया, एंड दो प्राइमरी लोग उसमें से जो थे जिनको कि जो कि मतलब काफी ज्यादा माने जाते थे, दो अलग अलग स्कूल्स के, दोनों ने आके इस बात की पुष्टि की कि ही इज एक्चुअली अ इनकारनेट ऑफ गॉड, अ गॉड इनकारनेट। फिर उसके बाद मतलब ही वाज लाइक, इनको तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मतलब वैसे ही वहां से क्या हंस रहे थे, वहां से कैसे रहे थे, ही वाज परफेक्टली नॉर्मल। अब हुआ क्या कि जो सेकंड वाले हैं उन्होंने बोला कि ये सिर्फ गॉड इनकारनेट ही नहीं है, ये ब्ला 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 ब्ला, और मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें की, ठीक है। तो जो भी है, अच्छा, वॉज वेरी गुड फीडबैक। उसके बाद से लोग भी मानने लग गए फिर तो, और क्योंकि पब्लिकली हुआ था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि आपकी जो टेक्निक अब तक रही है वो खाली गॉड को बुलाने की रही है बस। आई विल टीच यू तंत्रा। अब तंत्रा की उन्होंने टेक्निक कुछ मतलब एनर्जीज को मूव करना वगैरह समझाया उन्होंने कुछ इसको। एंड उसके बाद अब जो टेक्निक्स यहाँ पे यूज करेंगे उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तंत्रा। अकॉर्डिंग टू द तंत्र, द अल्टीमेट reality is chit or consciousness, which is identical with Sat or being and with Ananda or bliss. This ultimate reality, Satchitananda, existence, knowledge, bliss, absolute, is identical with the reality preached in the Vedas. And man is identical with his reality. But under the influence of Maya or illusion, he has forgotten his true nature. He takes to be real a merely apparent world of subject and object, and this error is the cause of his bondage and suffering. The goal of spiritual discipline is the rediscovery of his true identity with the divine reality. For the achievement, देखो, द गोल ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आप कोई भी मेडिटेशन करो, उसका जो गोल है वो है अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रीडिस्कवर करना। सिंपल, राइट? For the achievement of this goal, the Vedanta prescribes an austere negative method of discrimination and renunciation, which can be followed by only a few individuals endowed with sharp intelligence and unshakable willpower. But Tantra takes into consideration the natural weaknesses of human beings, their lower appetites, and their love for the concrete. It combines philosophy with rituals, meditation with ceremonies, renunciation with enjoyment. The underlying purpose is gradually to train the aspirant to meditate on his identity with the ultimate. आपको समझ में आया कि वेदांता का जो फिलॉसफी है वो एक बहुत ही ऑस्ट्रियर मेथड है, जहाँ पे कि यू विद अ कोल्ड मेंटल विल यू से who am I, you study yourself in every time, every possible and unshakable will power। ये बहुत ही एडवांस्ड पर्सन के लिए है। अब मैं तो समझता नहीं कि हम वहां पे आते हैं, मतलब मैं तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं आता हूँ। बट जो लोग वो कर सकते हैं उनके लिए वो ठीक है। दैट्स कोल्ड मेंटल
process, and I don't think I'm built for that. But that is not the only way also. Tantra जो philosophy है वो, by the way, I don't actually agree with this. I'll be honest with you. मेरा ये मानना है कि ये जो है ये, I don't completely agree with this. That's whatever he's written is his, maybe उनका अपना view होगा, but I don't agree with whatever he's written. But वो ये बता रहे हैं कि तंत्र जो है वो relatively worldly man के लिए है, जहाँ पे कि you practice spiritual philosophy along with the ritual, and you have enjoyment along with this, you, and so on, so on, so. So I don't actually agree with this कि वो सिर्फ वर्ल्डली लोगों के लिए है. Tantra can also be for people who, तंत्र का मतलब ये है कि any technique which involves energy manipulation is tantra, and all the great yogis that I know have employed some or the other form of tantra, some or the other form. I mean, even Lord Jesus talked about Lord's Prayer. I mean, that's form of tantra. It's technique of the chakras, no? हर एक फॉर्म में कहीं ना कहीं पे चक्र अवेकन हो रहे हैं. इन शॉर्ट, इट्स सिंपल, इट्स वेरी लॉजिकल एंड सिंपल. देयर आर टेक्निक्स in very powerful forms of Buddhism, which involve manipulation of energy in the chakras. That is really remarkable if you think about it. I mean, wow. So अलग अलग तरीके हैं. पूरा का पूरा वज्रयाना बुद्धिज्म, उसके चार सेक्ट्स, काग्यू बुद्धिज्म, फिर एक न्यिंगमा ट्रेडिशन, फिर दो और ट्रेडिशंस. ये सब के सब एनर्जी मैनिपुलेशन पे बेस्ड हैं. एनर्जी मैनिपुलेशन तक का रिक्वायरमेंट बहुत सॉलिड होता है. उसकी एक टाइम के बाद जब बॉडी पूरी तरह से सेट हो जाती है, उसके बाद यू आइडियली ओनली ओनली एंड ओनली वर्क ऑन द सोल, नॉट ऑन द बॉडीज एनी मोर. समझ में आता है ना? अगर आपको एक मेहमान को घर में लेके आना है, तो आप पहले घर को प्रॉपर्ली सेट करोगे. अगर वो बहुत ही एलिट, जैसे कि अगर अगर कोई ग्रेट गुरु आपके घर में आने वाला हो, आप घर को मतलब धो धो के साफ करोगे प्रॉपर्ली, बिकॉज ही इज ए ग्रेट ग्रेट टीचर. अगर वो घर में आके रहने वाला है, तो आप मतलब जैसे कि जब मास्टर चो आते थे कभी कभी इंडिया में, तो पीपल वुड स्पेंड ऑफ कोर्स टाइम लॉट ऑफ क्लीनिंग ये वो, बट वो भी होटल का रूम, हाँ, बट दे वुड डू इन्वोकेशंस इनसाइड दैट रूम टू ब्लेस, टू चार्ज द होल रूम विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि ही फील्स बेटर. A lot of work had to be done in that sense. So because his aura is too gentle and too soft, and very refined, right? Very sensitive also. So likewise, right? अगर आप सोल को अपने अंदर लेके आने वाले हो ज्यादा क्वांटिटी में, which is by the way called the of enlightenment, you have to really scrub the bodies properly, clean them thoroughly. You have to upgrade them qualitatively, ताकि वो उतनी एनर्जी हैंडल तो कर सकें. कभी कभी क्या होता है कि आपका किसी एक इनकारनेशन में कुछ ऐसा कर्मा होता है, या तो फिजिकल हेल्थ का, या तो रिलेशनशिप का, या तो मनी का, कोई तो कर्मा होता है कि ये चीज हो नहीं पाती है. मतलब ये है, इसका मैं आपको बताता हूँ. किसी किसी इनकारनेशन में क्या होता है कि कर्मा इस तरह का होता है कि आप कर्मा अगर वर्कआउट कर लेंगे प्रॉपरली, तो अगले इनकारनेशन में यू गेट अ सॉलिड अपॉर्चुनिटी टू स्पिरिचुअली रैपिडली अपग्रेड. ये थोड़ा जानना जरूरी है इसको. अगर आप इस एक इनकारनेशन में अपने आप को रैपिडली अगर अपग्रेड कर लेंगे, सॉरी, अगर अपना कर्मा पूरा का पूरा वर्कआउट कर लेंगे, बिकॉज इस कर्मा के वर्कआउट हुए बिना आपकी डिजायर एंड एस्पिरेशन मैटर नहीं करते. आप किसी काम के नहीं हैं, या बहुत कम काम के हैं एक्चुअली ग्रेट टीचर के लिए. तो उसके उसमें मैं ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ट्रीटिस ऑफ मैथमेटिक्स में साफ साफ ये लिखा है कि आपकी यूटिलिटी ग्रेट टीचर के लिए उतनी नहीं है जितना आपको लगता है कि होगी, अगर आपकी प्रैक्टिस लेवल तक नहीं पहुंची है तो. और कर्मा बीच में आ ही जाता है, क्योंकि वो उसको वर्कआउट किए बिना आप, कर्मा विल नॉट अलाउ यू टू प्रोग्रेस. अगर आपको किसी किसी का, जैसे कि काफी सारे लोग आपके आसपास भी होंगे, आपको लगता है कि मतलब दे मेड मैसिव स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, मैं एक बिहार स्कूल ऑफ योगा में देख रहा था कि किसी का नाम था परमहंसा समथिंग समथिंग, कुछ इसमें लिखा हुआ था. मैंने चेक नहीं किया कि एक्चुअली में क्या है, बट अगर अगर है वैसा, तो मतलब ये है कि अगर वो परमहंसा के लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि पहले इतनी मेहनत कर ली होगी
सब कर्मा निकाल दिए होंगे तभी इस इनकारनेशन में मौका मिला कि कम लेट्स गो फॉरवर्ड फास्ट, वरना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कर्मा ऐसे फंस के बैठा रहता है वहां पे। अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल देता हूँ अलग अलग, ठीक है। कर्मा फंस के बैठने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको, आपकी फैमिली में कोई काम नहीं करता एंड दे ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू, यू हैव टू वर्क 10 hours a day एंड टेक लॉट स्ट्रेस एट वर्क। उसके बाद आपको घर वालों के साथ टाइम का वो टाइम भी स्पेंड करना है, उनको छुट्टी पे भी जाना है, उनको ये भी करना है वो भी करना है। आपको मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस का एंड सर्विस का टाइम नहीं मिलता है। ये होता है वर्ल्डली एंगेजमेंट वाला कर्मा। और ये बहुत प्रॉब्लम करता है अगर आपको एक्चुअली में प्रोग्रेस करना हो तो। सच में ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत लोग इस तरह की अपने 3 बच्चे कर लिए, ठीक है, अब सबको बड़ा भी करना है, उनके लिए कमाना भी है, ये भी करना है वो भी करना है, एंड हाउ डू मेक एक्चुअल रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, पता नहीं। किसी किसी केस में पॉसिबल है, किसी किसी केस में पॉसिबल नहीं भी एक्चुअली। बहुत सारे केस में बहुत मुश्किल आती है आजकल के वर्क कल्चर में, तो बहुत मुश्किल। अगर आपका अपना बिजनेस है तो अलग बात है, बट अगर आप वर्क कर रहे हो कहीं पे आईटी वाईटी में तो बहुत मुश्किल है उसके बाद। सपोज अगर ट्रैवल भी है तो और मुश्किल हो गई। मोर एग्जाम्पल, अगर आपका हेल्थ कर्मा है और बीच में फंस के बैठा हुआ है कि यू कांट, योर बॉडी कांट हैंडल अ लॉट ऑफ एनर्जी, आपको बीपी का इश्यू फॉर एग्जाम्पल, आप कितना भी चाहो तो आप ज्यादा मेडिटेशन नहीं कर सकते। वो फंस के बैठा हुआ है बिकॉज दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ ए पास्ट, राइट। आप इसके लिए बहुत हीलिंग कर सकते हो, फॉरगिवनेस कर सकते हो, चीजें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पर अगर वो एक्चुअली में कार्मिक इशू है जिसको कि आपको फेस करना ही पड़ेगा, देन देयर इज नो ऑप्शन टू एक्चुअली बियर इट, एंड ये इनकारनेशन प्रॉपरली निकाल दो। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो है, आई थिंक रिलेशनशिप्स का अगर इशू है, जो है आपका क्या बोलते हैं कि सपोज कि आपका मदर इन लॉ के साथ ने इसके साथ नहीं बनता है, टू मच ऑफ अ नैग, एंड आप जो है अपने घर में यू आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड सो मच, तो वहां भी ये मेडिटेशन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। इसकी मतलब कि तुम अपने रूम में क्यों बैठी रहती हो, आगे काम किया करो, इतना काम किया करो, इतना काम किया करो, ये किया करो वो, उसमें भी नहीं मिलेगा टाइम एक्चुअली। सो रिलेशनशिप ये चीजें सपोर्ट में होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग जो अपने पाथ के लिए सीरियस होते हैं वो सब चीजें छोड़ देते हैं, जैसे कि लेट्स गो, लेट्स मेडिटेट एंड लेट्स बी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, बिकॉज स्पिरिचुअल ग्रोथ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए पता है क्या होता है, अगर एक आदमी ग्रो करता है स्पिरिचुअली, वो एक नेटवर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स को लेके ग्रो करता है, मतलब सबके सब ग्रो करते हैं, 1,000 of them ग्रो अ लिटिल बिट मोर बिकॉज दिस वन पर्सन्स रैपिड ग्रोथ, 1,000 of them ग्रो लाइक दिस। समझ में आया? ये इफेक्ट होता है आपके स्पिरिचुअली ग्रो करने का। तो आप जब ग्रो करते हैं तो आपका एग्जिस्टेंस जो है बाकी लोगों के लिए इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल ब्लेसिंग। आपका एग्जिस्टेंस ही सर्विस हो जाता है उसके बाद। इट्स समथिंग टू रियली नो एंड एक्नॉलेज, एंड आई थिंक ब्रिलियंट, एक्चुअली टोटली ब्रिलियंट। चलिए, आई डोंट एग्री विद दिस वर्जन ऑफ तंत्रा बाय द वे, बट जो भी है, द एवरेज मैन विशेस टू एंजॉय द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Tantra bids him enjoy these, but at the same time discover in them the presence of God. Mystical rites are prescribed by which slowly the sense objects become spiritualized and sense attraction is transformed into a love of God. So the very bonds of man are turned into releasers. The very poison that kills is transmuted into the elixir of life. Outward renunciation is not necessary. Thus, see, outward renunciation, वो मॉन्क का रोप डाल लेना, धन दौलत छोड़ देना, वो सब नहीं। आउटवर्ड renunciation इज नॉट नेसेसरी। Thus, the aim of Tantra is to sublimate bhoga or enjoyment into yoga or union with consciousness. For according to this philosophy, the world with all its manifestations is nothing but the sport
or a play of Shiva and Shakti, the absolute and its inscrutable power. The disciplines of Tantra are graded to suit aspirants of all degrees. Exercises are prescribed for people with animal, heroic, and divine outlooks. Certain of these rites require the presence of members of the opposite sex. By the way, ये मैं आपको पहले बताया था, कुछ टेक्निक्स हैं जहाँ पे कि मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा कि क्या, बिकॉज दैट इज नॉट ऑल राइट. कुछ टेक्निक्स हैं जहाँ पे कि you will need the presence of the opposite gender because उससे कुछ हो, something happens with that, and a specific energy is created with that in much greater quantity. उस एनर्जी का यूज करके यू कैन स्पिरिचुअली प्रोग्रेस एक्चुअली एक्सट्रीमली रैपिडली. इसलिए तंत्र वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज ऑल्सो. अगर आपको समझ में आ गया तो, समझ में नहीं आया तो ठीक है फिर, समझ में आ गया है तो इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज ऑफ प्रोग्रेस. बाय द वे, नो जोक्स, वेरी सीरियस स्टेप नाउ. या ये इसमें टेक्निक्स कुछ पावरफुल टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर, एक्चुअली बहुत पावरफुल होती हैं एक्चुअली. Here the aspirant learns to look on woman as the embodiment of the goddess Kali, the mother of the universe. The very basis of Tantra is the motherhood of God and glorification of woman. Every part of a woman's body is to be regarded as incarnate divinity, but the rites are extremely dangerous. The help of a qualified guru is absolutely necessary. An unwary devotee may lose his foothold and fall into a pit of depravity. According to because ये बहुत advanced practices होती हैं actually में, you are creating energies which are really hard to there's almost no knowledge about them, let's put it that way. Almost no knowledge about them. And so, but it's a good hint, by the way, huh? It's a very good hint, which is why अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको ये टेक्निक्स कभी सीखने के लिए मिलती हैं, प्रॉपर एक्चुअल टेक्निक्स, if you practice them properly, then you will realize that they are some of the most glorious techniques ever found in the nature, and they work really fast also. They don't work slow, they work very, very fast. Very interesting stuff though. Let's go forward. According to Tantra, Shakti is the active creative force in the universe. Shiva, the absolute, is a more or less passive principle. Further, Shakti is as inseparable from Shiva as fire's power to burn is from fire itself. Shakti, the creative power, contains in its womb the universe and therefore the Divine Mother. All women are her symbols. Kali is one of her several forms. The meditation on Kali, the creative power, is the central discipline of the Tantra. While meditating, the aspirant at first regards himself as one with the Absolute and then thinks that out of that impersonal consciousness emerges two entities, namely his own self and the living form of the goddess. He then projects the goddess into the tangible image before him and worships it as the Divine Mother. Sri Ramakrishna set himself to the task of practicing the disciplines of Tantra, and at the bidding of the Divine Mother herself, he accepted the Brahmani, I think her name was Gauri, right, as his guru. Just give me a second. All right, let's go forward. So Sri Ramakrishna, by the way, after डिवाइन मदर ने जब उनको परमिशन दी, उसके बाद ब्राह्मणी जो हैं उनको उन्होंने गुरु बनाया. He performed profound and delicate ceremonies in the Panchavati
and under the bell tree at the northern extremity of the temple compound. He practiced all the disciplines of the 64 principal Tantra books, and it took him never more than 3 days to achieve the result promised in any one of them. After the observance of a few preliminary rites, he would be overwhelmed with strange divine fervor and would go into samadhi, where his mind would dwell in exaltation. Evil ceased to exist for him. The word carnal lost its meaning. The whole world and everything in it appeared as the Leela, the sport of Shiva and Shakti. He beheld everywhere manifest the power and beauty of Mother. He beheld everywhere manifest the power and the beauty of the Mother. The whole world, animate and inanimate, appeared to him as pervaded with Chit, consciousness and Ananda, Sat Chit Ananda. अब ये जो कॉन्शियसनेस होती है ये जो होती है ये हायर सोल की कॉन्शियसनेस होती है आंचल जी यू आर पार्शली राइट बट दैट देयर इज फार मोर टू इट far like there's far more to it, right? Okay, so Satchidananda जो है that is the concept of the higher soul. You start to truly experience your higher soul downright at certain stage of progress. तो ऐसे उनको 3 दिन उनको लगे बस मतलब जो बुक्स में जो रिजल्ट्स थे वो पाने के लिए हर तंत्र प्रैक्टिस करते हुए very nice, very good, very powerful. He saw in a vision the ultimate cause of the universe as a huge luminous triangle giving birth every moment to an infinite number of worlds. He heard the Anahat Shabd, the great sound Om. Anahata, by the way, is heart chakra, means the आपको पता है अनाहता का मतलब क्या होता है अनाहता का मतलब ये होता है the sound which comes only from the one. जैसे कि अगर आपको फिजिकल पेन पे कोई भी साउंड अगर क्रिएट करनी है सपोज दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए पड़ते हैं राइट अगर आप इससे भी करेंगे तो भी जो 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 आवाज आएगी वो एयर एंड इसका इसका कांटेक्ट होगा राइट दो चीजें हैं यू क्लैप योर हैंड डू व्हाटएवर इट्स टू ऑब्जेक्ट्स क्लैंकिंग अनाहता का मतलब ये होता है कि साउंड दैट कम्स ओनली फ्रॉम अ सिंगल सोर्स इट डजंट नीड द अदर primordial that's why it's called primordial right let's go forward. It says that he saw in a vision that the ultimate cause of the universe as a huge luminous triangle giving birth every moment to an infinite number of worlds. He heard the Anahata Shabda, the great sound Om, of which the innumerable sounds of the universe are only so many echoes. He acquired the 8 supernatural powers of yoga, which make a man almost omnipotent, and these he spurned as of no value whatsoever to the spirit. He had a vision of the divine Maya, the inscrutable power of God by which the universe is created and sustained, and into which it is finally absorbed. In this vision, he saw a woman of exquisite beauty about to become a mother, emerging from the Ganges and slowly approaching the Panchavati. Presently, she gave birth to a child and began to nurse it tenderly. A moment later, she assumed a terrible aspect, seized the child with her grim jaws, and crushed it. Swallowing it, she re entered the waters of the Ganges. But the most remarkable experience during this period was the awakening of the Kundalini Shakti, the serpent power. He actually saw the power at first lying asleep at the bottom of the spinal column, then waking up and ascending among the mystic Sushumna canal and through its 6 centers or lotuses to the Sahasrara, the 1,000 petal lotus in the top of the head. He further saw that as the Kundalini went upward, the different lotuses bloomed, and this phenomenon was accompanied by visions and trances. Later on, he described to his disciples and devotees the various movements of the Kundalini, the fish like, the bird like, the monkey like, and so on.
The awakening of the Kundalini is the beginning of spiritual consciousness and its union with Shiva in the Sahasrara, ending in Samadhi, is the consummation of the tantric disciplines. Wow, this is crazy. This is amazing. About this time, it was revealed to him that in a short while, many devotees would seek his guidance. देखिए ये है, when you are awakened, when the Shakti in the form of Kundalini and crown, where the divine manifests in the form of Shiva, when they merge inside your system, the so-called divine marriage happened. But उसके बाद आप you cease to be a human. There is no humanness left after that. उसके बाद जो बचता है वो pure and 100% divinity होता है. It's a fully, like it's like a pure arhat. अरहट का मतलब उसमें अपना कोई कंपोनेंट है ही नहीं, उसमें जो कुछ भी है वो ओनली डिवाइन गेटिंग कलर्ड थ्रू माय पर्सनालिटी. मतलब अगर मुझे कोई नॉलेज है तो वो उतनी ही नॉलेज मैनिफेस्ट कर पाएगा. अगर मुझे साइंस की बहुत नॉलेज है तो वो साइंस के एरिया में बहुत काम, यू नो हाउ इट वर्क्स, राइट? एंड अरहट is not a human being. He is a potentially a powerful superhuman actually. In fact, spiritual science में तीन ग्रेड्स होते हैं. एक होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का, उसमें भी जिसको कुछ नहीं पता से लेके जिसको बहुत कुछ पता है, लाइक लाइक ऐसे होते हैं, राइट? वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वाइज, वेरी 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 वेरी. यहाँ पे सैवेज फॉर एग्जाम्पल, राइट? दे आर ग्रेड्स ऑफ इट. उसके बाद ये फिर भी ह्यूमन ग्रेड्स हैं. उसके बाद एक ग्रेड होता है सुपर ह्यूमंस का. दे ऑल लुक द सेम, दे मे बी वॉकिंग राइट नेक्स्ट टू यू, but their contact with the soul is already established and it's reliable to a considerable degree. इनको बोलते हैं इनिशिएट्स एक्चुअली. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनिशिएट्स, ठीक है? इसके बाद एक कैटेगरी आती है, वो होती है कॉस्मिक बीइंग्स की. इनको बोलते हैं कॉस्मिक इनिशिएट्स. मतलब ये होते हैं होली मास्टर, मतलब ग्रेट मास्टर्स एंड अबव. उस ग्रेड के होते हैं ये सारे के सारे. So they are not human beings, they are not superhumans, they don't even fall in the category of being called a human anymore. They're practically God realized beings. They are God incarnates, if that's what I would rather use a more appropriate word. So you always move from this to this to this. There's always an upward movement like this all the time happening. Even though you don't know it's happening, like right now also. Every time you learn lesson of life, you move here. A chakra lets go of something, you move up. Something like that, right? The more you do it, the more actively you do it, the more actively you will let go. And the more actively you will start to progress much faster actually. All right, let's go forward. So when you become a more divine being, when you can really transmit teachings to others, उस टाइम पे क्या होता है कि you start attracting people that need answers. तो इस टाइम पे उनको मालूम हुआ था कि in a short while many devotees would seek his guidance, right? कुंडलिनी पूरी ऊपर जाने के बाद Vaishnava disciples. After completing the tantric sadhana, Sri Ramakrishna followed the Brahmani in the disciplines of Vaishnavism. The Vaishnavas are worshippers of Vishnu, the all-pervading, the supreme God, who is also known as Hari and Narayana. Of Vishnu's previous incarnations, the two with the largest number of followers are Rama and Krishna. See, of Vishnu's previous various incarnations, the two with the largest number of followers are Rama and Krishna. Vaishnavism is exclusively a religion of bhakti. Bhakti is the intense love of God, attachment to Him alone. It is of the nature of bliss and bestows upon the lover immortality and liberation. God, according to Vaishnavism, cannot be realized through logic or reason, and without bhakti, all penances, austerities, and rites are futile. Man cannot realize God by self exertion alone. For the vision of God, His grace is absolutely necessary, and this grace is felt by the pure of heart. The mind is to be purified through bhakti. The pure mind then remains forever immersed in the ecstasy of God vision. It is the cultivation of this divine love that is the chief concern of Vaishnava religion. Wow, see?
The mind then remains. So it's okay. The mind is to be purified through bhakti. The pure mind then remains forever immersed in the ecstasy of God vision. यही जो है आई थिंक सबके सब रिलीजन्स एग्जैक्टली सेम चीज बताते हैं कि भगवान का नाम लो उससे तुम्हारा मन साफ होगा, राइट? मेरे पापा भी जो मुझे बोलते हैं तो यही इसी भाषा में बोलते हैं कि उनके नाम से जुड़ो, हिज ओन वे ऑफ सेइंग, राइट? कि भगवान के नाम से जुड़ो, मन साफ हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो मैं बोलता हूँ कि अच्छा आप जुड़ते हो क्या? मतलब मैं तो ऐसे पूछने में क्या जाता है, पूछ लो। तो पापा मतलब ही ऑब्वियसली ही डज हिज ओन प्रेयर्स एंड स्टफ, बट मेरे पापा जो है ही इज एक्चुअली क्या बोलते हैं, वो he teaches to a lot of upcoming Sikh generation about Sikhism and things like that. तो वो बहुत मतलब he talks a lot. He has a good preacher mindset actually. और वो शायद recently develop हुआ होगा, मतलब पिछले 5 से 10 सालों में or something like that. But he's very very good at his work because he gets invited to almost all the places. So very good. And I'm like कि मेरे पे पिचिंग काम नहीं करती है, प्लीज। Thank you. If you tell me something, I'll ask you two questions back, and they may not be the right questions, after a while. But anyway, so the thing is, it's a very funny episode. My father was preaching, and I'm like, then I started to ask him more two-layer, deeper questions, and he's like, but I don't know. And I'm like, you should. It's kind of funny actually. So I think we don't actually have talks after I start asking questions. It's kind of funny. But sometimes he generalizes too much, generic answers, and I'm like, अरे यार ऐसे मत बात किया करो. But for his level of understanding, he is doing very good work. That is an absolute truth. बहुत ही truth है, मतलब उसमें पक्का सच है. For his level of understanding, he is putting a tremendous amount of effort, and that is producing good results. वो तो बात सच है. That is truth. You don't have to be very accurate to do work that is to be done at your hand. You can be rough and fair. You have to just inspire people to do practices, meditation, things like that. That he's doing pretty awesomely, by the way. So that is something which is amazing. And just that preaching mindset kind of throws me off. So they also the exact same thing कि जो है make sure that you उनके नाम like इस्कॉन, यहाँ पीछे मेरे घर के पीछे इस्कॉन का बड़ा बहुत मतलब बैंगलोर का इकलौता इस्कॉन का टेम्पल है, यहाँ पीछे है, बस यहाँ मतलब घर के पीछे है। एंड दे से कि चैंट हरे हरे रामा 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 हरे हरे, ऐसे ही कुछ था। और हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा समथिंग हरे हरे समथिंग लाइक दैट। सो दे हैव दैट as a primary phrase, and if you meditate on that for an hour, 2 hours, 3 hours, you start to feel blissed out because the energy of love starts to come inside too strongly. Science is very very simple. The energy of love starts to come and you feel really expansive. Now the thing is this: you can do the like many times more of the same effect. Why does that work? Because Rama, Krishna, and Hari are all the names of Vishnu. They're basically saying love, 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 love in multiple ways. Do you understand this? It's very beautiful if you decipher that. Suppose if they start saying soham, 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 but by knowing, obviously, not just by repeating it, but by like being aware, soham, 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 soham. Yes, like I am that I am, I am that I am. They will eventually build a very, very strong spiritual cord. Do you know that, right? Have you tried doing it? Ouch. हायर सोल की बुक में साफ साफ दिया हुआ है, क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? चलिए लेट्स ट्राई। आई नो ये वो सेशन नहीं है, बट you know what, we'll try it in the afternoon session actually. That's much better. Okay, so my point is कि if you see, देखो वहां पे किसने लिखा है, हरे राम कृष्णा आर थ्री वर्ड्स ऑफ विष्णु। वो तीनों के तीनों वर्ड्स को ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज किया हुआ है कि वो लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में अंदर आती है। एंड कुछ कुछ लोग इनफैक्ट एक्चुअली हर्ड वेरी 2-3 years बैक, काइंड ऑफ रिसेंटली ओनली, कि कोई कोई 16,000 बार चैंट 16,000 टाइम्स इन अ सिंगल सीटिंग।
ओके, खाना पीना, कुछ सोना, कुछ टीवी देखना, कुछ पढ़ना, कुछ बाहर जाना, कुछ नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि सही में लोगों की लाइफ में और कुछ भी नहीं होगा इससे ज्यादा। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गिव्स देम पावरफुल रिजल्ट्स ऑफ ब्लिस। आई मीन दिस इज फैक्ट, या। सो if I mean, if it works for you, it's good. I don't know if it works for a person like me, for sure not. But yeah, these produce very good results, by the way. Very, very good results. So I suggest that, you try, if you have an intention of trying, try it out, try all these things out. However, for example, I'll give you my personal example. मेरे जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, मतलब मास्टर चौक से, उनकी एक टेक्निक है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन की। एक बार मैंने वो फर्स्ट टाइम 2018 में मैंने वो टेक्निक ट्राई की थी, बिना ऑडियो सीडी के। And I sat for about 1 to 1.5, no, 2 hours plus actually, yeah. And I sat and I realized कि लोगों की लाइफ में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल, उस टाइम पे कहीं पे फ्लड आया हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, फ्लड आया था, एंड families were drowning, and I was seeing all the images, and I'm like, let's stop, let's bless. एंड मैंने सिर्फ हार्ट चक्रा पे कम से कम 40-45 मिनट स्पेंड किए थे, लोगों की प्रॉब्लम समझते हुए। एंड आई वाज लाइक, व्हाट, मे यू बी ब्लेस्ड विद दिस, एंड देन एवरी टाइम न्यू प्रॉब्लम कम्स अप, मे यू बी ब्लेस्ड विद दिस, न्यू प्रॉब्लम, यू मे बी ब्लेस्ड विद दिस। इट वाज राइट फॉर मी, बिकॉज आई, मैंने ना पहली बार एक्सपीरियंस ये हुआ था कि हार्ट चक्र पे अगर आप एक्चुअली में इतना टाइम स्पेंड करोगे, क्राउन पे एक्चुअली में इतना टाइम स्पेंड करोगे, हार्ट क्राउन पे एक्चुअली इतना टाइम स्पेंड करोगे, तो एक्सटेसी इतनी पावरफुल थी उस दिन की। आई थिंक आई एम नॉट ओवरस्टेटिंग, विद 3 days तक माई हार्ट वॉज ब्रिमिंग विद मैसिव जॉय। और कोई प्रैक्टिस मैंने शायद की भी नहीं थी उसके बाद अगले 2 दिन तक, 3 days। सो बात है कि आप टेक्निक में कितना टाइम स्पेंड करते हो, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। आप इसमें करो चाहे उसमें करो, रिजल्ट सेम होगा उसका। टेक्निक बहुत पावरफुल है। आफ्टरनून सेशन जो है वो 2 to 4 का जो होता है, वो वाला सेशन है। लेट्स गो फॉरवर्ड। So, Vaishnavism is exclusively a religion of bhakti. Bhakti is intense love of God, attachment to Him alone. Um, it is the nature of bliss and bestows upon lover of immortality and liberation. God, according to Vaishnavism, cannot be realized through logic or reason. And without bhakti, all penances, austerities, and rites are futile. Man cannot realize God by self exertion alone. For the vision of God, His grace is absolutely necessary. See, for the vision of God, His grace is absolutely necessary, and His grace is felt by the pure of heart. The mind is to be purified through bhakti. The mind is to be purified through bhakti. The pure mind, see, this is the mind is to be purified through bhakti. The pure mind then remains forever immersed in ecstasy of God vision. See, the pure mind then remains forever immersed in the ecstasy of God vision. It is the cultivation of this divine love that is the chief concern of Vaishnava religion. There are 3 kinds of formal devotion: tamasic, rajasic, and sattvic. If a person, while showing devotion to God, is actuated by malevolence, arrogance, jealousy, or anger, then his devotion is tamasic, since it is influenced by tamas, the quality of inertia. If he worships God from a desire for fame or wealth or from any other worldly ambition, then his devotion is rajasic, since it is influenced by rajas, the quality of activity. But if person loves God without any thought of material gain, if he performs his duties to please God alone and maintain toward all created beings the attitude of friendship, then his devotion is called sattvic, since it is influenced by sattva, the quality of harmony. But the highest devotion transcends the 3 gunas or qualities, being a spontaneous, uninterrupted inclination of the mind towards God, the inner soul of all beings, and it wells up in the heart of true devotee as soon as he hears the name of God or mention of God's attributes. A devotee possessed of this love would not accept the happiness of heaven if it were offered to him. His one desire is to love God under all conditions. See, under all conditions is a very important word. Let me please come to that. In pleasure and pain. Yeah, see, in pleasure and pain, in life and in death,
in honor and dishonor, prosperity or adversity. Basically, इसका मतलब है you love God unconditionally under all conditions. You will accept God's will. You will live your life according to how God would have you live it under all conditions. Under all conditions. That is remarkable. I mean, it's just truly, truly remarkable. Let's read a little bit more before we close. There are two stages of bhakti. The first is known as Vadi Bhakti, or love of God qualified by scriptural injunctions. For the devotees of this stage are prescribed regular and methodical worship, hymns, prayers, and repetition of God's name and the chanting of his glories. This lower bhakti in course of time matures into parabhakti, or supreme devotion known as prema, the most intense form of divine love. Divine love is an end in itself. It exists potentially in all human hearts, but in the case of bound creatures, it is misdirected to earthly objects. See, it is the divine love is an end in itself. Of course, the purpose is achieved, no? It exists potentially in all human hearts, but in the case of bound creatures, it is misdirected to earthly objects. यहां से बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक। आई एम होपिंग आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड यू गाइस प्रॉब्ली लर्न अ लिटिल बिट मोर देन यूजुअल एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे एंड हम अगली बार दोबारा मिलेंगे सैटरडे को। Let's do a closing prayer. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, thank you for your great blessings. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. To our great spiritual teacher, to all the great spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great, great ones, we very, very humbly thank you for your great blessings. To Sri Ramakrishna Paramhamsa, we thank you. To his great teacher, the Brahmani Gauri, we thank you. To all his great disciples, we thank you. Thank you, thank you, thank you for the priceless teaching. Thank you so much. Thank you. Let's see each other on Saturday. देखिए शाम का सेशन जो है वो मेलिंग वन का है, आफ्टरनून का सेशन भी मेलिंग वन का ही सेशन है एंड उसके लिए वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। वो मैं पब्लिकली ऑर्गेनाइज नहीं करता हूँ, ठीक है। सी यू, बाय बाय, अपना वैसे हैव फन। So can you please share the link of that group as well so we can have a little bit more learning, if Link it's possible? you text me personally, yeah। Take care, bye All bye। right. Okay, sir. Thank you.